I can share the screens once you start the recording because I'm not getting that. Started. Okay. Mhm. Yeah, is it visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Mhm. So there is power cut issue. So if I will disconnect, then immediately let me know on WhatsApp. Okay. Okay, sir. So we can start today's session. So today we are going to cover water flooding and gas flooding. And definitely now you all aware about mobility ratio, capillary number, Tabor number. Tabor number was whatever I discussed yesterday was correct. Okay. And uh, that thing factor which impact on the recovery. So keep this all in your minds. It like we are going to discuss that factor only. Like these are the screening criteria for varieties of methods. So we will discuss for each methods what are the important factors in terms of recoveries and in terms of that particular method. And before moving to that portions, yesterday I asked you few questions, and based on that, I understand that like you do not have that much broad idea regarding to capillary pressure. So before going to water flooding, we cover these four topic which you can see right now on the screen, and in that we will. Okay, so let's start with the imbition and drainage because understanding of imbitions and drainage is required to understand where we use that water flooding and where we use that gas flooding. So let's start with that. So after that we will see that capillary forces and how does it help to displace non-wetting phase? Then gravity capillary equilibrium topic in capillary pressure. Third number, which is gravity and capillary equilibrium. It is very essential and it is very basic and it is important terminology for petroleum engineers. It may ask you in any interview, like in sale, in like in any technical interview, not in terms of business aspect, but it can be asked in many interviews, or even if you are applying for that research job and all, then it is very important topic to know. Then terminology related to saturation. So we all know relative permeability curve with respect to saturation, and this I have already covered in reservoir videos, but there are many terminology which I did not cover in that video that I will tell you because there are chances they may ask, like in gate it may be asked it may be asked directly to that 2 mark question or 1 mark question. Then we will move to water flooding. First we understand how water flooding works, then criteria for water flooding. Like whatever factor we discussed yesterday, we will see how that impact per particular water flooding.
Then we will understand displacement mechanism. So displacement mechanism is nothing but how water can push the oil in below the inside the reservoir. And then impact of heterogeneity, as we already discussed, heterogeneity impact on recovery. So heterogeneity has an impact in water injection rate. For like heterogeneity can impact on water injection rate. So we will discuss that. After that, we will shift to gas flooding. So here we are talking about general gas flooding because we can inject CO2 and to many gases. For each that kind of flooding, we will have a differentiation. But here we discuss in general terms how gas flooding is different from the water flooding, and how what are the advantages and disadvantages, and how to select which method is the more suitable for my reservoir. Then comparison of sweep efficiency for both of these flooding. And if time permits, then we will cover at least ternary diagram of a crude oil, which you might know, which you might aware about that, but we will try to cover that if possible. And if from the next session, we will start visible flooding. So let's start with the capillary pressure, and do not hesitate to answer. Just make this session more interactive as you can. Then and then we can learn more things. And if you want to know, like if I'm not covering that portion, and if you have any ideas like you want to cover that, then just immediately let me know in chat, or you can directly unmute yourself and you can ask, or you can tell me. Okay. So the first one is capillary pressure. So just tell me the capillary pressure definition. In what you understand by capillary pressure? Anyone? Capillary pressure means it is the ability how non-wetting phase is going to adhere the rock surface. Okay, good. Any anyone else want to explain in like in same term, like in different way? What is capillary pressure? Like what he said is a correct one, but in terms of any any other view on this capillary pressure? Okay. So what he said how non-wetting phase is going to adhere the rock surface is defined by the capillary pressure. In another terminology, here we are talking about recovery. So we want to recover as much as oil we can. So for that, oil should be more mobile than water. And we know our rock is a water weight, then oil is occupying large forces, and oil can move easily through this larger course, larger pores. Okay. So here we want to oil, here we want a displacement of oil through the oil, through the water. So हमें यहाँ पे oil को displace करना है किसमें से, water से. और मैं another term में बोलूँ तो हमें non wetting phase को displace करना है किसमें से, wetting phase से. So the force required to displace this non wetting phase through the wetting phase is a capillary pressure. Okay. And if we can, like we know, capillary pressure is simply we write as the pressure of non-wetting phase minus pressure of wetting phase. This is one formula for a capillary pressure. Here we can say that if capillary pressure value is positive, that means non-wetting phase pressure is greater than wetting phase pressure. Guys, do you agree this thing? Like whenever capillary pressure is positive, non-wetting phase pressure gradient is always, sorry, non-wetting phase pressure is always greater than the wetting phase pressure. Yes, sir. Okay. So what this formula indicate and what this formula indicate? This is oil water interference tension.
and this is radius of pores. Okay, just write it here. What is difference between these two? Can Means anyone? in above Yeah, go ahead. in above equation, it will show means how saturation is correct is a function of a pressure, non-wetting phase and wetting phase saturation, how it will behave. And in the Yes. below formula, it will show that how our capillary tube means how that fluid are spread on that particular capillary tube. Yes. Okay, so let me tell you this thing in a very layman way. So the below one formula, we can consider this as a required force to displace non-wetting phase through the wetting phase. Okay. What I wrote, the required force. And what is this formula indicate? This is the applied force or given force, we can say in another word, to displace same thing. Okay, non-wetting phase to wetting phase. और वी कैन से दैट हमें चलो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए 10 जूल का एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। हम में कितना एनर्जी है वो हमने कितना खाना खाया उससे हम कैलकुलेट करेंगे, और वो दोनों इक्वल होगा तभी हम बॉटम से टॉप तक जा पाएंगे। ठीक है, सो based on this understanding, I can say when these two forces, like the derivations, I think you can have a Tarek Ahmed and you can go through this. I'm not going through that derivation. You can derive this formula. So this value is basically we consider del rho GH, correct? Yes, sir. Okay. And when these two values are equal, del rho GH is equal to 2 sigma, then and then our phase can displace through non-wetting phase can displace through the wetting phase, else it won't. Okay, like value is less than, then that phase won't move. Okay, so this is simple understanding. We can say this is a gravity terminology. If you have a derivation, then you can understand this is simply we are comparing to gravity, because we know water gravity, like water has that gravity towards downwards, and when we mix the oil and water, oil density is low, so oil has a buoyancy, so oil can try to come above the water. Okay, and so in that case oil starts to move through the water. Correct. So non-wetting phase is displaced in our pores. What's happening? Non-wetting phase is displacing through the wetting phase. So at that moment, the pressure gradient for oil is higher than the pressure gradient for water, and oil can move in that case. That means this value is higher and this value is lower. Okay, this is low and this is high. That means this value is positive. So in that case, non-wetting phase can easily displace through that water only. After that, what happens? Like it cannot displace completely, but definitely water will remains inside the oil. We know why, because anyone know why water remains inside oil, which we consider as a Cornet water saturation? No, sir. Okay, so होता क्या है बेसिकली कि जो
एक टाइम के बाद जो वाटर का सेचुरेशन है वो क्रिटिकल सेचुरेशन से कम हो जाए तो वाटर मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ये जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू सेम है, बट वहां पे कैपिलरी फोर्स क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा कंपेयर टू दैट। दैट इज द रीजन वाटर रेसिडुअल वाटर सैचुरेशन वहां पे रुकेगा। सो दिस वी कंसिडर एज द ग्रेविटी कैपिलरी इक्विलिब्रियम। Gravity is try to equilibrium with the capillary all the time because oil wants to move above the water, but we can forcefully also make oil to move through the water. Okay, now next is, so now guys, you are able to understand what is capillary pressure actually is. Yes, sir. And what he told now, it's completely correct. Like it is a additions of a non-wetting phase to attach towards that rock surfaces. So we don't want that. We want oil must be free through from that surface attachment, and then it can move that in a faster way. Then so that is the reason capillary pressure is that thing is defined by this formula, and whatever gradient is available to displace the oil through the water is defined by this del rho v, and both are equal. That means gravity is equilibrium with capillary and displacements happens. Now come to imbition and drainage process. Imbibition, okay. I think spelling is correct, else make it correct. And drainage. So what is difference between imbition and drainage? Tell me. In drainage, wetting phase, saturation is decreasing, and Okay. reverse to that is Wetting, the imbibition. okay. Wetting phase saturation decreasing and non-wetting का saturation इसमें decrease होगा. Correct? So for a recovery, which one is good for us? Like oil recovery. For a oil recovery, which either imbition is good or drainage is good. Drainage How? means उसमें वेटिंग फेज का सैचुरेशन कम हो रहा है, तो वाटर का सैचुरेशन कम हो रहा है, तो ऑयल का सैचुरेशन बढ़ेगा, तो ऑयल ज्यादा मूव हो सकता है। इन ड्रेनेज वेटिंग फेज का सैचुरेशन कम हो रहा है एंड नॉन वेटिंग फेज का सैचुरेशन बढ़ रहा है। ये रिजर्वायर है, ठीक यस है। सर। एंड ये रिजर्वायर में यहाँ से वेटिंग फेज का सैचुरेशन इसमें कम हो रहा है और नॉन वेटिंग फेज का सैचुरेशन बढ़ रहा है। दैट मीन्स ऑयल इसमें ज्यादा स्टोर हुआ है, वाटर यहाँ से निकल रहा है। हमें ये चाहिए क्या? व्हाट यू आर नहीं। अंडरस्टैंडिंग, ये वेटिंग फेज का सैचुरेशन कम हो रहा है, दैट मीन्स वेटिंग फेज मूव हो रहा है। ओके, सो हमें क्या चाहिए ज्यादा रिकवरी के लिए? ऑलवेज इम्बिबेशन प्रोसेस। ओके, सो जो भी ड्राई मैकेनिज्म है अपनी ग्रेविटी ड्राई, वो सब में कौन सा प्रोसेस अप्लाई होता है? ड्राई मैकेनिज्म में बेसिकली होता क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है मूव करवाने का ऑयल को। दैट मीन्स ऑयल मूव हो रहा है, दैट मीन्स उसका सैचुरेशन वहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ऑयल को हम नॉन वेटिंग फेज कंसीडर करते हैं। तो ऑयल का हाँ, तो सैचुरेशन कम इम्बिबिशन। होता है। हाँ। यस, इम्बिबेशन। ओके, तो ड्राई मैकेनिज्म आर एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस। एंड इन ड्रेनेज कैन यू टेल मी एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, जहाँ पे ऑयल का हम
मतलब ऐसा वाटर कोई एक्वीफर में से जब रिजर्वायर में आ रहा हो, तो एक्वीफर में वाटर का सेचुरेशन saturation कम होगा करेगा? तो उधर। Okay, consider this right now or search for it. Okay. One. Okay, I think I had explained this in reservoir also, but even I'm not recalling that thing. Once we will discuss this flooding. Now, if it will come, then we will have a discussion for this. But guys, this is not the things which you have to mug up. Like from the process, you are able to identify whether it is a drainage or imbibition. Imbibition, okay? It's a imbibition, right? Or imbibition? Imbibition ही होता है ना? I am confusing little bit. हाँ, इम्बिबिशन। Okay, imbibition. Actually, भोई सर जब पढ़ाते थे तो थोड़ा उनका टोन ऐसा है ना, तो मुझे हर बार ये टर्म ऐसे ही सुनाई देता था. दैट इज द रीजन मेरा भी वैसे ही निकलता है. सो नेक्स्ट इज, so you know these things, but may I ask you one more question? What is spontaneous imbibition and what is spontaneous drainage? Any idea? नो सर। Okay. स्पॉन्टेनियस So guys, मतलब जो खुद से होगा वो। I'm not asking the meaning of English word. I'm asking when it happens. Any idea like when spontaneous happens and when drive imbibition happens? Imbibition happens. Okay, let's have a discussion on that. Hmm. सो स्पॉन्टेनियस मीन्स वर्ड का मीनिंग तो अब पता चल ही गया है कि जो खुद से हो सके, लाइक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वी हैड इन थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे एंट्रोपी लेस देन जीरो होता है. ओके, सो लेट्स मैं आई टोल्ड यू करेक्ट, लाइक આપમેળે થતી પ્રક્રિયાઓની યસ એન્ટ્રોપી લેસ દેન ઝીરો હોય, બરાબર છે. So like what is spontaneous? So guys, have you gone through that process, measurement of wettability? Like how can we measure wettability? Do you have any idea which test we use to measure wettability? एमोट टेस्ट आई थिंक। Yes, Amot test. यूएसबीएम। And one more method, यूएसबीएम। USPM. Yes, correct. So you went through one graph in USPM method, where we consider area of wetting phase, displacement of where wetting phase displaces the non-wetting phase, and area of where wetting phase displaces the non-wetting phase. So I have a picture of that. So let's consider this one. And this is again gate question. Okay. I will tell you what are the questions already asked in GATE examination. So let's suppose what we are doing here, is it visible? यस सर। Okay. Actually, when- okay, now is it visible? So हम क्या करते हैं पहले, जो भी हम टेस्ट करते हैं, like all of guys you are aware about that, or shall I explain USBM method, or you guys already know that? So like process you should know at least. नहीं सर, एक बार बताओ ना, हमने किया नहीं है सर। Okay, okay. So, like when we want to measure these, na, so what we do, we have a two chamber, okay, simply. और हम क्या करेंगे कि हम पहले इसको ऑयल से फिल कर देंगे, ठीक है. देन हमारा वाटर रहेगा,
तो जो वाटर है वो क्या है, अपना वेटिंग फेज है, और जो ऑयल है वो अपना क्या है, नॉन वेटिंग फेज है। सो हम पहले क्या करेंगे, इसको ऑयल से पूरा भर देंगे, और जो हमने ऑयल से फिल किया है तो हम वाटर को क्या करेंगे, इसमें से पास करेंगे, और जब वाटर इसमें से पास होगा तो डेफिनेटली वो ऑयल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ओके, सो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, वॉट एवर एनर्जी रिक्वायर्ड वाइल, जो वेटिंग फेज किसको, नॉन वेटिंग फेज को डिस्प्लेस करता है, हम उसको नोट करेंगे, ठीक है। और इन नेक्स्ट केस व्हाट वी डू, ये अब जब ऑयल डिस्प्लेस हो जाएगा तब ये एंटायर किससे फिल हो जाएगा, वाटर से फिल हो जाएगा। हम क्या मेजर करेंगे कि जब ऑयल वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, इसमें से क्या डिस्प्लेस हो रहा है, वाटर, इसमें से क्या डिस्प्लेस हो रहा था, ऑयल। तो जब ऑयल वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है तब कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हम ये कंसिडर करेंगे। नाउ वी वांट टू नो वेदर इट इज अ वेटिंग फेज और वेदर इट इज अ नॉन वेटिंग फेज। सो लेट्स सपोज रॉक इज अ वाटर वेट, अपना रॉक क्या है, वाटर वेट है। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, लाइक which phase should easily pass, like ऑयल को वाटर को धक्का लगाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, या वाटर को ऑयल को धक्का लगाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। ऑयल को वाटर को धक्का लगाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऑयल को वाटर को धक्का लगाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये वाटर वेट है, तो वाटर क्या है, उसमें चिपका हुआ है। ओके, सो इन दैट केस वी कैन कंपेयर दिस टू एनर्जीज and we can have an idea. Okay, so you can go through this test from Abhijit Dandekar. It's very simple. We just measure two indexes here, correct? That based on this graph. So यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो वाटर सैचुरेशन इज एक्स एक्सिस, इज इन एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे अपना वाटर सैचुरेशन है वो इस साइड बढ़ रहा है, ये 100 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इनिशियली क्या है, कंप्लीटली वाटर सैचुरेटेड है। ये वाले जोन में क्या है, इनिशियली क्या है, ये वाटर सैचुरेटेड है इनिशियली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियली ये वाटर सैचुरेटेड है, और हमने क्या किया, धीरे 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 वाटर को डिस्प्लेस किया, किससे, ऑयल से, लाइक इन कोर। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑयल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को। और कब तक डिस्प्लेस कर पाएगा, जब तक हमारा ये वाली वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज दिस वैल्यू, कैन एनीवन आंसर, in terms of क्रिटिकल saturation? ऑयल Yes, yes, क्रिटिकल ऑयल it is a सैचुरेशन। critical, or you can say residual water saturation, not oil saturation. We are decreasing the water na, this value is critical water, or residual or critical, both are the same terminology. हम residual को while we are moving that particular phase उस साइड से कंसीडर करते हैं, और क्रिटिकल को जब वो फेज एंटर हो रहा है उस साइड से कंसीडर करते हैं। ओके, सो क्रिटिकल और रेसिडुअल वाटर सैचुरेशन। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाले सैचुरेशन पे क्या हुआ, हमने पूरे जो भी वाटर हम डिस्प्लेस कर सकते थे, किससे, ऑयल से। तो ये वाला जोन कौन सा है, जहाँ पे ऑयल डिस्प्लेस दी वाटर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आए तो क्या हुआ कि जो पूरा हमारा रॉक था वो अब ऑयल से भर चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे, एंड वी नो कि जो एम्बिबेशन का कर्व होता है वो ड्रेनेज के ऑलवेज किस साइड होता है, इस साइड ही होता है। यस सर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इम्बिबेशन कर्व इज ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द ड्रेनेज, कभी भी गलती नहीं होगा। ओके, सो जब भी हम ऑयल को डिस्प्लेस करवाएंगे, अब ये वाली प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ये कैपिलरी प्रेशर हम नोट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे विथ रिस्पेक्ट टू सैचुरेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। ओके, ये वाला जो कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा था वो क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि हम किसको डिस्प्लेस कर रहे थे, नॉन वेटिंग फेज को वेटिंग फेज में डिस्प्लेस कर रहे थे। तो डेफिनेटली जो कैपिलरी प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर को, अब हमारे पास ऑयल है, अब हम वाटर से ऑयल को धक्का लगाने की ट्राई कर रहे हैं। करेक्ट? आर यू फॉलोइंग मी टिल हियर और एनी डाउट? नो सर, ओके। ओके, एक्चुअली जिनको पहले पता नहीं है ये वाली चीज, वो बोलना रखो कि यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनको पता है उनको तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, और कोई उनका कोई वो होगा डाउट तो वो भी इजीली क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू स्पीक इफ यू हैव एनी डाउट, और जस्ट स्टॉप मी एंड जस्ट टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो यहाँ से क्या हो रहा है, अब क्या धक्का लगा रहा है किसको, अब यहाँ पे ये वाले जोन पे क्या हो रहा है, वाटर किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ऑयल को। ओके, बट यहां तक, जहां तक कैपिलरी प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस ऑलरेडी क्या है, ऑयल का ग्रेडियंट हाई है, किससे, कंपेयर टू वाटर। तो इन दैट केस क्या होगा, ऑयल का जो मूवमेंट है वो स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रेडियंट है। यहाँ पे आए क्या हुआ, कैपिलरी प्रेशर जीरो हो गया, दैट मीन्स आई थिंक डेल रो जी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या ये अब अपने आप मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो ग्रेडियंट था वो खत्म हो गया। बट यहाँ ये वाली प्रोसेस में क्या हो रहा था, डेफिनेटली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ऑयल को डिस्प्लेस कर रहा है। और जब हम ये टेस्ट करते हैं उस टाइम पे हमें पता नहीं है कि वेदर इज इट ऑयल वेट ड्रॉप और वेदर इट इज अ वाटर वेट ड्रॉप। सो अभी उसको कंसिडर नहीं करते हैं। बट ये वाली प्रोसेस में इतना बोल सकता हूँ कि ऑयल क्या हो रहा था, ये ग्राफ हम एक्चुअल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करवा रहा है। दैट मीन्स ये वाला ग्राफ में क्या हुआ होगा, ऑयल अपने आप मूव हुआ होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के सिवा। तो उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इम्बिबेशन। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ होगा, वो अपने आप मूव नहीं करेगा, क्योंकि अब ग्रेडियंट क्या हो गया, अब ग्रेडियंट की वैल्यू जो थी, ऑयल का ग्रेडियंट दैट मीन्स पी नॉन वेटिंग और ऑयल, और पी वेटिंग वाटर। सो जो ऑयल की ग्रेडियंट की वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू इक्वल होती है पी ऑयल माइनस पी वाटर से। तो ये जब दोनों इक्वल हो गए, उस केस में क्या हुआ, अब ऑयल अपने आप मूव करना बंद कर दिया, और अब हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा उसको मूव करवाने के लिए। तभी ऑयल मूव होगा, किससे, वाटर से। और ये वाला उसका ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हो तो इम्बिबेशन ही रहा है, बट कैसे, फोर्सफुली। सेम वे जब यहाँ पे आए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ओके, हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है। ओके, ये इनिशियल था। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, प्राइमरी डैमेज होता है जो ऑब्वियसली फोर्सफुली होगा। उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद हमने स्पॉन्टेनियस इम्बिबेशन देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे फोर्स्ड इम्बिबेशन देखा, ये वाले जोन पे। और उसके बाद अब हम फिर से क्या करना चाहते हैं, अगर हम फिर से उसमें से वाटर को मूव करवाना चाहते हैं, इसमें से जो अब हम अभी कौन सी कंडीशन पे है, हम अभी कंडीशन पे है जहाँ पे फिर से हमने वाटर को पूरा भर दिया है, ऑयल लाइक यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वाटर का सेचुरेशन फिर से हाई कर दिया, और अब हम फिर से इसमें से ऑयल को डिस्प्लेस करवाना चाहते हैं। तो दैट मीन्स कि जब तक उसका ग्रेडियंट बिलो जीरो है, ओके, जब तक उसका ग्रेडियंट बिलो जीरो है तब तक क्या होगा, वाटर कैन इजीली पास बट ऑयल कैन नॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वाटर अपने आप, वाटर कैसे, स्पॉन्टेनियसली मूव हो रहा होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके बाद क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फोर्सफुली हमें क्या करना होगा, क्योंकि अब हमें वाटर को मूव करवाना है, ये वाले जोन में क्या करवाना है, हमें वाटर को मूव करवाना है। ओके, यहाँ पे क्या करवाना है, वाटर को हमें मूव करवाना है। तो किससे करवाना है, ऑयल से। बट ये वाले जोन में क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि
कैपिलरी प्रेशर पॉजिटिव ऑब्जर्व हो रहा है, दैट मीन्स कि ऑयल के प्रेशर की वैल्यू वाटर के प्रेशर की वैल्यू से बड़ी है। ओके, ग्रेडियंट बड़ा है तो कैपिलरी प्रेशर पॉजिटिव ऑब्जर्व हो रहा है, तो इन दैट केसेस ऑयल कैन मूव इजीली। बट अगर वाटर को मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज अ सेकेंडरी ड्रेनेज फोर्स। सो रिमेंबर हमने यहाँ से कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखना है। You should aware about primary drainage, उसके बाद क्या फॉलो हुआ था, स्पॉन्टेनियस इम्बिबेशन, उसके बाद क्या हुआ था, फोर्स्ड इम्बिबेशन, देन क्या हुआ था, स्पॉन्टेनियस ड्रेनेज, और उसके बाद क्या हुआ था, फोर्स्ड सेकेंडरी ड्रेनेज। इन प्राइमरी ड्रेनेज क्या था, प्राइमरी ड्रेनेज में पीसी ग्रेटर देन 0 था, एंड ड्रेनेज मतलब वेटिंग फेज को हम क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, वेटिंग फेज का सैचुरेशन कम करना चाहते हैं। ओके, सो प्राइमरी ड्रेनेज में क्या होगा, इन प्राइमरी ड्रेनेज में हमारा कैपिलरी प्रेशर पहले तो ग्रेटर देन 0 होगा, एंड ओके, वाटर रिमूव फोर्सफुली। इन स्पॉन्टेनियस एम्बिनेशन में भी प्रेशर 0 है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ऑयल का ग्रेडियंट वाटर से ग्रेडियंट से 0 है, और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं पीसी ग्रेटर देन 0 है, और हम मूव किसे करवाना चाहते हैं, वी वांट टू मूव दी ऑयल, और पीसी ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ऑयल कैन रिमूव स्पॉन्टेनियसली। ओके, समझ जाना है इतने से, और अपनी नोट में लिख लेना यार। इन्फोर्स्ड एम्बिशन क्या था, पीसी अपना हो गया लेस देन 0, बट हमें यहाँ पे मूव किसको करवाना है, ऑयल को करवाना है। ठीक है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो पर्टिकुलरली मैं मान के चल रहा हूँ अभी की वाटर वेट रॉक है। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस फॉर वाटर वेट रॉक। करेक्ट, एंड हमें मूव किसे करवाना है, ऑयल को करवाना है, तो क्या ऑयल रिमूव होगा यहाँ पे फोर्सफुली। करेक्ट, और स्पॉन्टेनियस डैमेज मीन पीसी क्या है, इसमें लेस देन 0 है, और हमें मूव करवाना है, अभी ड्रेनेज है तो वाटर को, और उस केसेस में वाटर रिमूव स्पॉन्टेनियसली, और लास्ट में क्या है, फोर्सफुली सेकेंडरी, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, मूव द ऑयल, एंड ऑयल कैन मूव, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें वाटर को एंड वाटर कैन मूव forcefully. So does it clear what are these four terminal? Oh, sorry, my bad. So does it clear now these four terminologies? Yes, sir. Okay, and let's suppose
हियर मैं अब ये सब हटा देता हूँ, ऊपर लिख लिया हमने। एंड जो काम की चीजें हैं इसमें वो मैं एक बार लिख के इसको ऊपर ले जाता हूँ। याद रखना ये वाली वैल्यू क्या होती है, रेसिडुअल वाटर saturation, and this is residual oil saturation. ओके और अब हमें पता करना है, हमें इनिशियली तो पता नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल से हमें कर्व मिला है। ओके सो whatever the area under this curve na, like initially we are doing this, so whatever the area we are getting under this curve na, this indicate the energy to displace the water थ्रू दी ऑयल। ओके सो यहाँ पे क्या मूव हो रहा है, वाटर मूव हो रहा है, हम किसको निकाल रहे हैं, वाटर को। सो ऑयल डिस्प्लेस दी वाटर, वो वाला जो एनर्जी है वो इसके एरिया से मिलेगा ये कर्व के। सेम वे में ये वाला जो कर्व है उसका जो एरिया होगा, ओके उससे क्या पता चलेगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस दी ऑयल बाय दी वाटर। ओके करेक्ट, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? रिपीट करो ना सर एक बार। ओके तो यहाँ पे क्या मूव हो रहा है, वाटर मूव हो रहा है, रिमूव क्या हो रहा है यहाँ पे, यस सर, वाटर करेक्ट, और वो किससे वाटर, हो रहा हाँ, है, ऑयल से रिमूव ऑयल। हो रहा है। यस तो ये वाला एरिया का जो ये वाले कर्व का जो एरिया है यहाँ का A1, वो क्या देगा कि कितना एनर्जी चाहिए हमें, किसको किसको निकालने के लिए, वाटर को निकालने के लिए, किससे, ऑयल से। इतना तो क्लियर है, वो यहाँ सैचुरेशन देख के पता चल जाएगा। यस सर, यस ओके सर। ये वाला क्या एनर्जी देगा कि ऑयल को डिस्प्लेस करने के लिए किससे, वाटर डिस्प्लेस दी ऑयल, ये वाला एनर्जी मिल गया हमें। दोनों एनर्जी मिल गई, ये वाला एनर्जी मिल गया, ये वाला एनर्जी मिल गया। तो हमने अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था ना कि अगर ये वाला एनर्जी हाई है, ओके ऑयल डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को, वो वाला एनर्जी अगर हाई है तो रोक कैसा होगा, वाटर वेट। यस करेक्ट। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, चिपका हुआ है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी लग रहा है। जो चिपका हुआ यस होगा सर, उसमें उसको डिस्प्लेस करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, ये सिंपल लाइन बुक में लिख लो, ठीक है। जो चिपका हुआ होगा, जो भी वेट होगा, उसको डिस्प्लेस करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, ये लाइन लिख लो। ओके और आई डिड नॉट रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर दैट इंडेक्स, कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला फॉर वेटेबिलिटी इंडेक्स? लॉग A1/A2। log, let's A1/A2। consider this one as a A1, A1। this area as a A1, and this area is A2, correct? A2, yes। Yes. So we can write, okay, just, oh, let's suppose this area is A1, this area is A2, this is the residual water saturation,
this is the residual oil saturation and यहाँ पे ऑयल डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को और यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस कर रहा है ऑयल को. Then wettability index I is given by log of A1 divided by A2. Okay, and we know when A1 is greater than A2, A2 is less than A1, A2 is equal to. Okay, when A1 is greater than A2, then this value, like ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है A1 वाली, तो log की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगी. एंड I greater than 1 means water weight, correct? Water weight. Yes. Yes, sir. एंड A2 लेस देन A1 है. ओ सेम चीज लिख दिया फिर से, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I लेस देन 1 ऑयल वेट इक्वल है तो क्या होगा, Neutral weight. Neutral. यस न्यूट्रल वेट. Okay, so this may be asked in next gate, but intuition behind this entire concept is clear right now. Yes, sir. Okay, so these two things are again important. Gate 2020 में ही ये क्वेश्चन आया था, बट इससे क्वेश्चन आया था कि क्या होता है इसमें, क्या रिमूव होता है और कैसे, आई थिंक क्या रिमूव होता है, बट उस टाइम पे वो पेयर वाला क्वेश्चन था, तो ओनली वन. अगर आपको यही पता है कि ड्रेनेज में नॉन वेटिंग फेज का saturation, okay, every time I will consider now waiting phase, so it is easy to that thing correlate. Okay, तो ड्रेनेज में वेटिंग फेज का सेचुरेशन क्या होता है, कम होता है. अगर इतना पता हो तो हम आंसर दे सकते थे उसका, बट हर बार जरूरी नहीं है ऐसा हो, तो ये सारी चीजें याद रखना. लाइक कॉन्सेप्चुअल है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है. आई थिंक इजीली लॉजिक लगा के भी बना लिए जा सकते हैं. Okay, so hope this is clear to all of you. This is very important in terms of this subject also. Okay. Okay, so let's move ahead. And one thing, try to make your own knot, like try to maintain your own knot, but do not try to make this knot during the session. Just after the sessions, I will share this notebook with all of you. Then from this notebook, you have a good idea, so you can prepare knot for you, like separate knot. It will help a lot, and try to write with 3 pen like in your actual notebook also, because I usually prepare notebook in this tab only, so you can see the advantages of tablet. So make sure your concentration is in on the content. If you try to prepare not while the session, then I don't think you can keep your entire 100% concentration. That is the reason I am writing this stuff correctly and like clean and neatly. So you will refer this later after this session. Immediately try to prepare the notes. Okay. So this topic we had covered. Ambition versus drainage. How to capillary forces help to displace non-wetting phase. Now you have idea, okay, regarding to this. And now you can answer during the interview also now, or during like anyone ask you these questions like कब ये वाला saturation रहेगा इससे भी.
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है ऐसा मान के हम चलते हैं, ठीक है। कैपिलरी प्रेशर क्या हो गया, ड्रास्टिकल, मीन नॉट ड्रास्टिकली बट बहुत ज्यादा हाई हो गया ये वाले जोन में। तो यहाँ पे अब रेसिडुअल रहेगा, क्योंकि कैपिलरी फोर्स सफिशिएंट नहीं है वो वाले वाटर को ऑयल से निकालने के लिए, क्योंकि ऑयल फेज क्या हो गया एंटायरली, वो एक कंटिन्यूअस फेज बन गया, और वाटर क्या हो गया, एक डिसकंटिन्यूअस फेज बन गया। यस, दिस इज द मेन रीजन। ओके, डिसकंटिन्यूअस फेज एंड कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस फेज में क्या हो गया, ऑयल हो गया, और डिसकंटिन्यूअस फेज में वाटर हो गया, और जब वाटर डिसकंटिन्यूअस फेज में हो गया तो वाटर कैन नॉट मूव। So hope this is clear to all of you. I had tried my best because this is the hard to explain. और if you have any confusion like, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सर ने यहाँ पे वाटर को मूव करवा दिया, यहाँ पे ऑयल को मूव करवा दिया, मिक्सअप हो जाता है। तो आफ्टर दी सेशन जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन नोट एंड ट्राई टू मेक entire these things correctly. If you understood anything wrongly, then just correct yourself, because I had written all things clearly here in this page, on this page, not in this page. Okay, so let's move ahead. So these four topics we already, okay, the terminology related to saturation. Okay, so there are three terminologies related to this. Do you guys any idea regarding pendular saturation, funicular saturation? No, sir. Anyone? No, sir. Okay, we will discuss that. It is not that much hard. So guys, all of you know this curve, right? ये थोड़ा रटने वाला चीज है कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लाइक आपका नाम शुभम है तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई बाने रखा है तो है। तो वैसा ही ये एक थिंग है। आपको याद रखना है कि ये वाले सैचुरेशन को हम इस नाम से जानते हैं। ओके, यू नो दिस। ये मैं दिस इज आई एम कंसिडरिंग फॉर वाटर वेट रॉक, तभी ये ऐसा शेप लेगा। ऑयल वेट के लिए थोड़ा डिफरेंट शेप होगा इसका। ओके, सो वी नो दैट थिंग कि ये वाला, इसको हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं बेसिकली। And if you guys do not have idea regarding this, then you can go to YouTube channel, Get in Petroleum. In reservoir section, you will in in relative permeability section, this curve is very well explained, each and every aspect. This zone is A, this zone is B, and this zone is C. Okay, and we know this is the residual water saturation. This is SRO. Okay, so guys, anything you want to ask related to this? Okay, so I think you know this curve very well, and in this curve again, uh, this saturation value is increasing this side. Okay, always make sure just look first look on this graph axis, and because it can be like this also, or it can be Y saturation also. So always whenever curve you will get related to this stuff, na, always have that always look first for that axis values. Okay, so what I want to tell you, there are 3 kind of saturations available, like नाम रखे हैं उनके. So I'm writing reason here. Now let me answer this thing first. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कैसे इसको बनाना सही रहेगा टेबल को. ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेटिंग फेज का सैचुरेशन.
और यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन वेटिंग फेज का सैचुरेशन। Okay, then now you have to tell me in zone A. Now you know this is zone A, this is zone B, and this is zone C. In zone A, waiting phase is mobile or immobile. Like in for each value, you have to tell me whether the waiting phase is mobile or immobile or non-waiting phase is mobile or immobile. Let's start with zone A. तो zone A में क्या होगा? Waiting phase mobile होगा कि immobile होगा? I'm considering this rock as a water weight rock right now. और एनी लेट सपोज एनी वेट रॉक, तो जोन ए में वेटिंग फेज का क्या सीन होगा? अगर वाटर वेट रह रहा है तो वाटर का क्या सीन रहेगा जोन ए में? मोबाइल होगा कि इमोबाइल होगा? इमोबाइल होगा। इमोबाइल इमोबाइल होगा। ओके, ये वाला इमोबाइल होगा। और नॉन वेटिंग फेज डेफिनेटली वैल्यूज मोबाइल। है यहाँ पे। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे कैपिलरी प्रेशर लिख दिया। ये होता है रिलेटिव परमेबिलिटी कर्व है। ओके, के आर ओ, के आर डब्ल्यू, और ये क्या है पता है? डॉट डैश लाइन। नो सर। नो, एनीवन? नो सर। ओके, ये सिंपली दोनों का सम है, ठीक है, के आर ओ और के आर डब्ल्यू। मीन्स इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों का सम करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। कभी भी डाउट है तो यहाँ पे वैल्यू ले लेना 0.2 0.6 और दोनों को सम करके देखना कि कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अबे सो इमोबाइल हो गया। और ये क्या होता है ये वाले जोन में? नॉन वेटिंग फेज। जोन ए में नॉन वेटिंग फेज क्या होगा? मोबाइल। क्योंकि यहाँ पे परमेबिलिटी देख लो, यहाँ पे वैल्यूज है। ओके, ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है मोबाइल होना, और इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि ये के आर ओ का ग्राफ है। ओके, ये वाला। सो यहाँ पे क्या होगा? ये मोबाइल होगा। ओके, जोन बी में क्या होगा? दोनों के साथ दोनों की वैल्यू है, के आर ओ भी है, के आर डब्ल्यू पे, दोनों क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। ओके, और जोन सी में क्या होगा? ये वाले जोन में वेटिंग फेज क्या होगा? मोबाइल। ओके, और नॉन वेटिंग फेज? इमोबाइल। ओके, इमोबाइल। ओके, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, फिनिक्यूलर इज इक्वल टू वेटिंग फेज इज और नॉन वेटिंग फेज क्या है? मोबाइल है। ओके, और अनदर वन इज पेंडुलर। पेंडुलर किसे कहेंगे? जहाँ पे वेटिंग फेज इमोबाइल है। और इंसुलर किसे कहेंगे? इंसुलर कहेंगे जहाँ पे वेटिंग फेज, सॉरी, नॉन वेटिंग फेज इमोबाइल है।
ओके, अब यहाँ पे देखना है कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। फिनिकुलर किसको बोलेंगे, जहाँ पे वेटिंग फेज और नॉन वेटिंग फेज क्या है, मोबाइल है। ऐसा कहाँ कहाँ पे है, मीन्स जहाँ पे भी मोबाइल है, ओके, मोबाइल के साथ कोई वो नहीं है, तो जहाँ पे भी मोबाइल है, यहाँ पे भी मोबाइल है। मैं कलर यूज करता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे करने के लिए। फिनिकुलर कहाँ कहाँ पे है, ये वाला फिनिकुलर है, ये वाला फिनिकुलर है, ये वाला भी फिनिकुलर है, और ये वाला भी फिनिकुलर है। जहां पे भी मोबाइल है वो क्या है, फिनिकुलर है। आइदर वो वेटिंग फेज है या नॉन वेटिंग फेज है। तो तुम्हें ये दो चीजें याद रखनी है करेक्टली, ओके। ये दो, पेंडुलर क्या है, जहां पे वेटिंग फेज इमोबाइल है, और इंसुलर क्या है, जहां पे नॉन वेटिंग फेज इमोबाइल है। वेटिंग फेज क्या है, यहाँ पे इमोबाइल है, इट मीन्स ये वाला क्या है, पेंडुलर है। और ये वाला क्या है, इंसुलर है, करेक्ट। Yes, sir. और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है सच में। दिस आर जस्ट द नेम असाइंड टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सैचुरेशन। और अगर कोई रीजन है, अगर कोई डीप सर्च करना चाहता है कि क्यों ऐसे नाम रखे गए, तो यू कैन रिसर्च दैट, ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द दैट फोर टॉपिक। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, याद रह जाएगा, ओके। सिंपल ही है, जहाँ पे वेटिंग फेज इमोबाइल है उसको पेंडुलर कहेंगे, और जहाँ पे नॉन वेटिंग फेज इमोबाइल है उसको इंसुलर कहेंगे। और ऐसे सिंपली याद रखना है। तो वायर से जब करंट पास होता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, करेक्ट। तो हमारा करंट यहाँ पे क्या है, ऑयल है, ठीक है। करंट ऑयल क्यों है, क्योंकि भाई हमारी रिक्वायरमेंट ऑयल है, ठीक है। हमें घर पे रिक्वायरमेंट होती है करंट की, वैसे यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है ऑयल की। तो समझ, इजीली याद रह जाएगा, आप शायद अब कोई उतना डाउट नहीं रहेगा। सो एनी डाउट इन दिस टॉपिक, No, sir. any doubt, any like any comment on delivery of lecture, are you getting whatever I'm saying, either it is in English or either it is in Hindi? Any issue with my English also, you can tell me. No, no, sir. It's good. Okay, then next topic we will start after a break of 5 minutes. In this 5 minute, I don't think today we can cover that miscibility part. We will cover that as a separate video, because that is huge topic and that is again important one. So these two topics are, this topic whatever we discuss till here is important. These four, uh, hope you learned new things from this topic which you might not previously know. But with these two flooding, we are going to cover these two flooding. It won't take more than half an hour to cover, but we will start the session after 5 minute break. You can drink water or have some food. Okay, we will start the sessions after 4:20. Okay, not 4, okay, 4:20 or 4:25 max. Sir, Okay, can I stop the recording or? you can, no need to stop. Okay, okay, sir. Or in this 10 minute, if you have any doubt, whatever we covered in lecture 1 and whatever Hello, sir. covered, yes, Can I ask the question apart from that you secondary can ask. question? Yes, you can ask. Sir, If you have any doubt related to this, you can ask. sir, in GATE 2022, there is one question related to formation evaluation. Yes, So in that, they are question. They are asking the what is the value of secondary porosity? Okay, yes, yes, go ahead. and there is a they are given the value of matrix means density log value, and Yes, what is that sonic log value? Sonic log value. yes,
Yes, sonic and density values they gave, and they asked for a secondary porosity. Yes, so sir, from a density we will get the total porosity, okay, and from Yes. sonic we are getting a primary porosity. From sonic, you are getting the primary. Yes, correct. So sir, how can we evaluate? How can we find the value of secondary porosity? अरे simple तो है total minus that one primary. पर सर उसमें सर वो आंसर की जो थी ना उनकी, तो सर उसमें अलग आंसर दिया था। मैंने किया तो वही था मतलब। आंसर आई जाए मैं જોયું हेलो अच्छा ओके। Yes. आंसर आई जाए मैं જોયું मिलिंद I don't think ये difficult था. Actually, I already covered this ना in that well logging हाँ video. हाँ Okay, हाँ, and उसके बाद भी I मैं सॉल्व I किया था। think I gave GET 2022 and I correctly attempted this question, so I don't think any uh, issue with this. And ओके this is ओके। again this concept is again not previously asked in GET, and I covered and it came into that 2022. So in next GET you can expect that to find saturation of residual water saturation with resistivity log, which I also covered in that resistivity log. Definitely in next 2 or 3 GET this question will come definitely. I'm thinking I have a belief on this, like that question may come. And this is the concept given in rider. Actually they in rider you can't find the any questions, but concepts you can find in rider, and based on that they can prepare this, like they have to just assign the value to parameters one and they will ask. So just be ready with that. uh, okay, anything else? सर वो जो ड्रिलिंग में जो क्वेश्चन था ना, ड्रिलिंग लाइन वाला। Actually, okay, let's do one thing. After the session, just ping me in the chat of WhatsApp. We will discuss that. ओके ओके सर। Okay. Let's keep the discussion related to UR right now. After that, you can ping me anytime in chat. Okay, but just make sure ping in the chat only, so other can also have an idea or other can also like help to you, because I can get time in weekends only. In Monday to Friday, I don't think I will get even time to look the messages also. And UR is really easy subject. You can score full out of whatever marks questions are present in GATE. So just focus on this. Don't skip or don't like avoid these kind of subjects, because अगर इसमें से marks कटे ना, then सीधा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके आए होगे उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा. So I think I have explained the all necessary terminology which required, so that I won't repeat during this method every time. And I will share one material with all of you. Just have a look into that. And do not share it externally, else you will be in trouble. Not from my side. It's someone else material.
So don't share without his or her permission. You can share with your friends. There is not any issue with that. So someone from you ping in the chat like he has an interest specific to drilling subject. Who was that? No, sir. No, Heath was that, right? Yes, it. Uh, we are not able to listen you properly. You are not audible actually. Speak louder. Yes, Heath. So regarding to drilling, Jindal is one of the leading drilling company in India has currently vacancy, but they require that experienced people. So if you are interested, then try to contact some of one of the senior from like you. This is not for only specific to you. This is for all of you. Try to contact your seniors and ask them specific regarding to this requirement. You can get the detail of your alumni from Avnish sir. Just contact Avnish sir. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. Uh, so in WhatsApp, I am sharing one document. Just avoid highlighting. Okay. There is no meaning of highlighting in that. Or just remove from that add-on. You can do that. Don't consider like highlighted things are important, but not highlighted are not. Everything is important in that. You have a read and you have a note. If you don't want to prepare note, then that would be important. Hope you received that. Correct? Yes, sir. Okay. I'm not saying it is 100% important or well prepared, but at least you have an idea what we discussed today. And if you, that, I think it was copy pasted from books only. I will give you the smart PPT and PDFs in next week only. I will share the link address. Okay. Drive address I will share. You can access the drive. I will share that by next week. This week I will collect that all material and upload to the drive. Okay, so we can start now. It's already 4. So the next topic is water flooding. Any idea regarding to water flooding? Like, have you heard this term before this? Yes. Yes, sir. So tell me what is water flooding? Means, sir, we need to inject some amount of water in particular area of interest of a reservoir, and from that we will maintain the reservoir pressure from water flooding. Okay, so the first thing first you told is that it maintains the reservoir pressure, correct?
Yes, sir. Okay. Okay. So we are. So the first thing we discussed is how was it maintain the reservoir pressure, correct? And like as he told, uh, our objective here to just maintain reservoir pressure, and for that we inject the water to the reservoir, and whatever uh, water we are injecting. So water has its own specific properties, like its own viscosity and density. And we all know the water density is obviously greater than the oil density, but there are certain types of oil, such as extra heavy oils, which contain the API value, uh, not API value less than 10, means the density value is greater than the density of the water. Okay, so let's suppose I have a two kind of reservoir. One is undersaturated and one is saturated. So for what do you think, which one is more beneficial for water planning? You know the phase envelope, right? Yes, sir. So what is this bubble point curve? Okay, you all know this bubble pressure curve, bubble point pressure curve, or whatever. Or what do you mean by undersaturated reservoir? Pressure is greater than bubble point pressure. Yes. Which pressure? Reservoir pressure, correct? Is the vibration. Yeah. So let's suppose this is my point. So this is the zone. Let's suppose I am like for any reservoir, the temperature remains constant at a particular depth. So I'm talking about particular depth. So I keep my temperature constant here. And at a constant temperature, if this may be a initial reservoir pressure, and it reduced to bubble point pressure of that particular crude oil or reservoir fluid, and after that it will enter inside this saturated, this is saturated zone, and this is under saturated zone. Can anyone explain me why the pressure is reducing from initial pressure value to this value? What kind of event occurs inside in terms of crude oil and dissolved gases, and how does it impact on the property of crude oil? Can anyone brief about it? Whenever the pressure is reducing from initial reservoir pressure to bubble point pressure, so there is a chance, there is a whatever amount of gas which is already present in oil at a reservoir condition, it will try to evolve from that, and it will try to push the oil towards the wellbore, and in property. So that solution gas oil ratio is increasing, and bubble point pressure will decreasing.
बबल पॉइंट प्रेशर का फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर. volume factor. Okay, when I say fluid properties, so you are, I think you told correct. I did not listen. I'm not able to listen that properly. But can you tell me, like, when the pressure, while reducing the pressure from this value to this value initially till bubble point pressure value, okay, of any particular fluid, and after that the value of that this below the bubble point pressure value, or when I'm talking about undersaturated reservoir, how dissolved gas behaves, like what happen here with dissolved gases while reducing pressure in undersaturated zone. Means It will first it will expand. expand. Okay. Yes, Expand. they expand. And when what is the impact on viscosity of crude oil in that zone? Viscosity will reduce. Okay, so initially Reduce. we are here and here viscosity we have. So initially viscosity reduce. Okay, this may be considered as a bubble And point. Okay, correct. Is it clear all of you right now? Like why viscosity Yes. will reduce? Because expanding the dissolved gases. Or we know, like let's suppose if mixture of oil and gas is present and gas is in higher in terms of volume, then definitely the overall mixture density will decrease. And if another case we consider where gas is in smaller in volume but oil is in higher in volume, that means the heavier is high but lighter is in small amount, and if we mix then the density value will remain toward the heavier side. That means the higher value we can observe, that we already know from that drilling fluid डिजाइन वी कैन वी हैव आइडिया रिगार्डिंग दैट, करेक्ट. सो हम बेराइट को कम वॉल्यूम में ऐड करेंगे, पानी को ज्यादा वॉल्यूम में ऐड करेंगे, ताकि जो दोनों की डेंसिटी है उसके बीच वाली या उस लाइक वाटर साइड की डेंसिटी का हम फ्लूइड प्रिपेयर कर सके, करेक्ट. yes sir. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्कोसिटी कम हो रही है ऑयल की. आफ्टर दैट इन सैचुरेटेड जोन क्या होता है, यहाँ पे ये वाले जोन में Increase अगर होगी बात करें तो या यहाँ पे क्या होगा, डिजोल्व गैस तो निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, फ्री गैस बन जाएगा. एंड क्या होगा, ऑयल का विस्कोसिटी बढ़ेगा. दैट मीन्स ये वाले कर्व में क्या होगा, ऐसे इंक्रीज होगा आफ्टर दैट बबल पॉइंट प्रेशर. सो वी नो दिस. नाउ टेल मी वन थिंग, in which cases there are chances we can get better value of mobility ratio. Like better value of mobility ratio means we want to lower the mobility ratio, like in which case we will get the lower value of mobility ratio while we are injecting the water and we want to displace the oil with undersaturated reservoir and with saturated reservoir. So in what case we will get the better mobility ratio or lower mobility ratio? Undersaturated, I think. Yes, because the dissolved gas are present and viscosity value is lower at a lower side. Yes sir. करेक्ट. बिकॉज डेफिनेटली जो प्रेशर है वहां पे हम वो क्या करना चाहते हैं, रिजर्वायर का प्रेशर हम इंक्रीज करना चाहते हैं. तो जब ऑलरेडी अगर लाइक बेस्ट कहाँ पे मिलेगा, डेफिनेटली बेस्ट कहाँ पे मिलेगा, बबल पॉइंट पे ही मिलेगा, करेक्ट. क्योंकि बबल पॉइंट पे ही लोवेस्ट विस्कोसिटी ऑब्जर्व होती है ना. Yes, yes sir. ओके, सो हाईली अंडर सैचुरेटेड रिजर्वायर है, वहां पे कोई भी फ्री गैस अवेलेबल नहीं रहता है. तो इन दैट केसेस फ्री गैस अवेलेबल रहेगा तो और एक इश्यू हो सकता है. कैन एनीवन टेल, आइडेंटिफाई? क्या क्या सर? अगर फ्री गैस अवेलेबल रहेगा, लेट्स सपोज सैचुरेटेड जोन होगा तो डेफिनेटली फ्री गैस अवेलेबल रहेगा. तो
उस केसेस Yes, में sir. और एक इश्यू हो सकता है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे. Which one? You know, the rock is the water weight, and we know gas and oil are non-weighting phases. Okay, but when we consider gas and oil system, in that case the rock is oil weight. Again, the free gas is a non-weighting phase in that case, so it have a higher mobility due to non-weighting characteristics. Correct? Yes, sir. Okay, so that is the another drawback of having saturated reservoir. So this is mostly beneficial for a saturated, undersaturated reservoir. So the first we discuss how it works, and second thing we discuss here is the characteristic of reservoir, impact of characteristic of reservoir on water flooding. Third thing we will discuss is heterogeneity. So heterogeneous reservoir होगा, okay? Heterogeneous reservoir. So in case of heterogeneous reservoir, अगर rock हमारा water weight है, so there are chances it may create a spontaneous emission. Now you remember, now you have idea regarding spontaneous emission, correct? So we will discuss this as a separate topic. So I'm keeping that for now. लेट सपोज सैचुरेटेड और लाइट ऑयल रिजर्वायर है, तो उसमें क्या होगा, हाई जीओआर प्रेजेंट रहेगा, और वी कैन से कि जो जीओआर की वैल्यू है वो डेफिनेटली बड़ी होगी कंपेयर टू अंडर सैचुरेटेड, क्योंकि फ्री गैस इवॉल्व हुआ है, वो भी हम काउंट करेंगे. तो उस केसेस में मिसिबल फ्लडिंग करना ज्यादा बेटर है, किससे, वाटर इंजेक्शन से. वाई, वो हम मिसिबल में ही कवर करेंगे, क्योंकि राइट नाउ यू डोंट नो व्हाट इज मिसिबल फ्लडिंग, दैट इज द रीजन आई एम नॉट also discussing that. Now we can switch over to second part which we want to cover is a displacement mechanism. Like now you have a idea regarding that na, regarding to this where we can apply water flooding effectively in terms of type of reservoir. Any doubt in this, what we discussed regarding undersaturated and saturated? No, sir. Okay, good. Okay, so अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वाटर को लाइक डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म तब स्टार्ट होगा जब हम हमारे वाटर को क्या करेंगे, इनसाइड द रिजर्वायर इंजेक्ट करवाएंगे. ओके, सो टू डू दैट व्हाट वी रिक्वायर्ड इनिशियली वाटर, और वाटर कहाँ से आएगा, एक्वीफर से, करेक्ट? Yes, sir. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अभी के लिए, कि हम ट्राई करेंगे कि बबल पॉइंट प्रेशर जब अचीव हो उसी टाइम पे हमारे वाटर को क्या करें, हम इंजेक्ट करवाएं, ताकि हम मैक्सिमम रिकवरी उससे ले सके. एंड हमें एक चीज ये भी पता है कि जैसे जैसे हमारा गैस, फ्री गैस अवेलेबल होना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे टोटल अमाउंट ऑफ गैस इनसाइड द रिजर्वायर बढ़ेगा, और उसका अनदर मीनिंग ये भी होता है कि हमारा जीओआर इंक्रीज होगा. ठीक है, जैसे जैसे जीओआर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा ऑयल प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है. होप यू ऑल गाइज आर अवेयर अबाउट गैस कैप ड्राइव, करेक्ट? Yes, sir. इन दैट केसेस वी नो ना, इनिशियली गैस पुश करता है, बट फिर जीओआर बढ़ने लगता है तो ऑयल का प्रोडक्शन कम होता है. तो कीप दिस थिंग इन माइंड and we will start displacement mechanism. So there are 3 steps in water flooding. I will not discuss that much related to how process performs, but I will discuss what are the important factor related to that process. And anyhow in your UR courses, most of the faculties will discuss regarding to process only. But अब वाटर ही डालना है तो उसमें क्या ज्यादा डिस्कस करें, सरफेस पे क्या इक्विपमेंट होता है, दैट माइट बी इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू इंटरव्यू, बट नॉट माइट बी दैट मच इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू गेट एग्जामिनेशन. ओके, दैट आई बिलीव.
and like according to pattern, they never ask that kind of question. So I don't want to waste time on that. So we can consider 3 stages for water flooding. So I will give you the brief idea what we do in these stages. Simple, we inject initially the fill up volume. So fill up volume is nothing but I told ना कि हमारा बबल पॉइंट प्रेशर होगा तो क्या होगा, बेटर रिकवरी मिलने का चांस है, क्योंकि वहां पे ऑयल की विस्कोसिटी मिनिमम होती है, और ऑयल की विस्कोसिटी जब मिनिमम होती है तब जो हमारा मोबिलिटी रेशियो है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इनिशियली वी इंजेक्ट द फिल अप वाटर वॉल्यूम, और दैट वॉल्यूम मस्ट बी लेस देन फ्री गैस अवेलेबल. ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फिल अप वॉल्यूम ऑफ वाटर को इंजेक्ट करेंगे, और दिस वॉल्यूम मस्ट बी लेस देन फ्री गैस अवेलेबल. एंड इसमें क्या होगा, इसमें ये चीज होगा कि जो हमारा प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, और प्रेशर को कहाँ तक ले जा रहे हैं, बबल पॉइंट प्रेशर तक, तो देयर आर चांसेस कि जो जो फ्री गैस इवॉल्व हुआ है वो क्या हो जाए, रीडिजोल्व इनटू ऑयल. तो यहाँ पे क्या हो करेंगे, हम पहले फ्री गैस को क्या करेंगे, रीडिजोल्व करेंगे. ओके, और ये और एक चीज क्या करेगा, इससे क्या फायदा होगा रीडिजोल्व करने से, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्राई टू मेंटेन प्रेशर at which value, at a bubble point value. Clear this first step? Yes, sir. Yes. So how can we identify कि we will reach to completion of this first stage? So there is once oil will shift to the production well, then we can say that like it's a end of the fill up period. The next stage, the next step is like now we reach to the initial requirement. Now then in next step is a very simple one. In that we will inject water in a continuous manner, and that water will displace the oil, and this fill up volume don't allow uh, do not allow to decrease the not decrease the, but this fill up volume does not allow to reduce the pressure below the bubble point pressure. That is the main function of this fill up volume. In next step, we are displacing the oil with water. Okay, water displace the oil. So quickly, I will give you the idea regarding to profile. For this flooding, I don't think any that animated photo required. So I will make the profile here. For from next time, I will collect the smart photo or like photos for each mechanism. So like it can save the time, but for water flooding, I don't think that is required. तो जब वाटर डिस्प्लेस करेगा ऑयल को, ओके, और ऑयल प्रोडक्शन, तो जब भी हम वाटर फ्लडिंग करते हैं ना, तब एक चीज ध्यान में रखना, ये चीज आगे जाके भी काम आएगी. मैं इसको रेट से लिखता हूँ कि जो वाटर इंजेक्शन का रेट है, हम मान के चलते हैं कि वो ऑयल प्रोडक्शन का भी रेट है. I will ask you this again during numericals, because based on this, I found one numerical also. So we will discuss that in frontal advanced theory. Water injection is equal to oil production rate. और ये चीज में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम वाटर को इंजेक्ट करके ही ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हमारा जो वाटर इंजेक्शन का रेट है वो
डेफिनेटली ऑयल के प्रोडक्शन के रेट के इक्वल होगा। और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। इनिशियली रिजर्वायर कैसा होगा, ये लेट सपोज मैंने पहले दो वेल ड्रॉ किए, वन इज द इंजेक्शन वेल, अनदर वन इज द प्रोडक्शन वेल। सो अगर मैं ये वाले जोन की बात करूं, लेट सपोज दिस इज माय रिजर्वायर, तो पहले क्या होगा अपना, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे वाटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑयल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा। लेट इट मेक लिटिल बिट क्लियर। ओके, सो हमारे पास टू वेल है, वन इज इंजेक्शन वेल एंड अनदर वन इज प्रोडक्शन वेल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी, हम इंजेक्ट करवा रहे हैं वाटर को, बट अभी ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। ये वाला वेल प्रोफाइल कब का है, एट इनिशियल। ओके, सो गाइस कैन एनीवन टेल मी, जब हम यहाँ से वाटर इंजेक्ट करवाएंगे, सो इन दैट केस ये कैसे शिफ्ट हो सकता है, एनी आइडिया? Okay, let hello. Am I audible now? I am not disconnected. Just Yes, sir. confirm it. Okay, okay. तो जैसे ही हम यहाँ से पहले फिलअप वॉल्यूम, हम क्या करेंगे, पहले फिलअप वॉल्यूम इंजेक्ट करवाएंगे, तो ये जो वॉट एवर गैस यहाँ पे होगा वो क्या करेगा, ऑयल में वापस जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। आई एम नॉट ड्रॉइंग दैट स्टेज बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज दैट मच रिक्वायर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने वाटर डालना स्टार्ट किया, और हम अभी इस पोजीशन पे हैं कि यहाँ से जो हमारा ऑयल है, अब हमारा जो गैस है वो इधर वापस चला गया है या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा है ऐसे, ठीक है। आइडियली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गैस, ओके। और हमने जब यहाँ से वाटर इंजेक्ट करना स्टार्ट किया, तो इनिशियली क्या होगा कि जो भी वाटर है वो यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा और वो ऑयल जोन में जाने की ट्राई करेगा। हम यहाँ से ऑयल जोन में उसको इंजेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो वाटर है वो अपनी प्रोफाइल चेंज करेगा कुछ इस प्रकार से, ओके। यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं इसको। ये वाला क्या है, वाटर विच वी इंजेक्टेड, ये क्या है, वाटर हमने जो इंजेक्ट किया, ओके। और ये क्या कर रहा है, अभी ऑयल को क्या कर रहा है, आगे पुश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, अपना ऑयल यहाँ पे मूव करने लगेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऑयल जा रहा है इस साइड, प्रोडक्शन की साइड, ओके। और यहाँ पे क्या बच रहा होगा, कॉर्नेट वाटर, करेक्ट। आएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब हमने वाटर इसमें इंजेक्ट करना स्टार्ट किया तो इसने अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाइड किया, और पहले हमने फिलअप वॉल्यूम डाला, तब जो जितना हो सके उतना गैस को हमने ऑयल में रीडिजोल्व करवाया ताकि ऑयल की विस्कोसिटी क्या हो, कम हो जाए।
एंड जो वाटर हम इंजेक्ट करवा रहे हैं वो वाटर ने क्या करना स्टार्ट किया, ऑयल को धक्का लगाना स्टार्ट किया, और जो भी वाटर हम इंजेक्ट करवा रहे थे उसने यहाँ पे पूरा वाटर तो रिमूव नहीं होगा, देयर आर कॉर्नेट वाटर ऑलवेज रिमेन्स। और अभी हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, ये वाला प्रोफाइल कब का है, जब हम कंटिन्यूअसली वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्टिंग वाटर कंटिन्यूअसली। ओके, एंड हम यहाँ से ऑयल को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम ये वाला जो फ्री गैस अब यहाँ पे बचा है, इट में प्रोड्यूस थ्रू दी वेल। ओके, इनिशियली ये गैस निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पे में भी थोड़ा बहुत गैस क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, ट्रैप गैस। ओके, देयर आर चांसेस, but after certain time, let's suppose consider the long time period, and after that long time period what happens, ये जो भी वाटर था, तो ये पहले फ्रंट ऐसा था, फिर ये फ्रंट आगे मूव होगा, ऐसा होगा। ओके, ये फ्रंट क्या कर रहा है यहाँ पे, यू कैन सी ना, ये फ्रंट मूव करेगा पूरा। You guys already listened that terminology which I told you again and again, frontal advance theorem, okay, अथवा frontal advance concept. That concept is nothing but how this front moves forward through while pushing the oil towards the production well. तो ये फ्रंट क्या करेगा, ऑल टाइम ऐसे मूव करेगा। ओके, और लास्ट में क्या होगा, ये सबको प्रोड्यूस कर देगा, उसके बाद क्या होगा, क्या सारा ऑयल प्रोड्यूस होगा, नहीं सर। ओके, तो देर आर ऑब्वियसली रेसिडुअल्स ऑयल लेफ्ट। सो इन इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसे हम किस तरह से जानते हैं, ब्रेक थ्रू। ओके, ब्रेक थ्रू मीन्स क्या होगा, ये वाला फ्रंट यहाँ तक पहुंच जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक पहुंच जाएगा, एंड अब ऑयल नहीं प्रोड्यूस होगा, अब क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। okay, so in last stages this front will ऐसे ऐसे मूव हो रहा था, और अब क्या हुआ, ये फ्रंट पूरा यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है रेसिडुअल ऑयल। ओके, और यहाँ से पूरा वाटर से ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, वॉट एवर वाटर वी इंजेक्टेड वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लेट सपोज टी इज इक्वल टू टी एन टाइम का था, n-2 टाइम का है, और ये वाला t इज इक्वल टू करंट टाइम का है। ओके, जस्ट यहाँ पे ऐसे दिखा है, तो अब ये पूरा किससे भर जाएगा, वाटर से हो जाएगा, और रेसिडुअल ऑयल यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। अब हम इंजेक्ट करना बंद कर देंगे, अब कोई फायदा नहीं है इंजेक्ट करने से। ओके, और जो फ्री कैश होगा वो निकल जाएगा, वो इनिशियली निकल जाता है, वी नो दैट कॉन्सेप्ट ना, यहाँ पे थोड़ा वो ड्राइव वाला भी कॉन्सेप्ट लगता है। So this is the injection well, this is production, and this is figure C at a breakthrough. Any doubt in this process? And for a better recovery, to have a better recovery, we always try to make this displacement effect in a piston way. Like जैसे piston धक्का लगाता ना है, वैसे हम try करते हैं कि ये piston like effect हो। Okay? This is again like this is initial. So this one is for while we are injecting water continuously, how front moves,
while pushing the where water is push the oil towards the production well, and this is at a breakthrough. Water will start to produce from this production well, and residual oil is left behind. So if you don't have any doubt in this, then we can switch to the next one, heterogeneity impact on water running. So regarding to these No doubt. calculations and all stuffs, we will discuss that in frontal advanced theory while we will at end of this course. Like mostly I will cover that at the end because that is the most important, and we will have many questions, like whatever question you can see in the chat now, that is also from that theory only. So here you have to remember this process because it may be asked by someone, then you can explain this very well, and there is nothing that much important. You have to focus on this undersaturated saturated topic, then this is the previous one. So till here, what we discuss in water flooding, like what is the how water flooding works. So it basically maintains the reservoir pressure, and what we inject in here, we are injecting water here. The next we discuss like at what pressure value we should inject the water, so we will get the better recovery. We skip two topics like related to miscible flooding and comparison between miscible gas flooding and water flooding. So like to explain these things, it require I think 20 minutes, but to remember the important things through this concept is just take 5 minutes. Okay, not 5 minutes even, it's just a 3 to 4 line, but you have to understand this process because based on this process you can like based on this based on this front how the water is pushing to oil, you may generate logic during the question. So that is the reason. And remember this thing, whatever at whatever rate we are injecting the water, at the same rate oil is producing from the production well. Come to the next part of this water flooding, heterogeneity impact. Do you think, guys, heterogeneity is the impacting factor in water flooding? Yes, sir. Yes. How? Sir, means if we have a heterogeneous reservoir, so Yes. there is a chance that water will move in another direction, and it will block sometime, I think. Uh, what it can block? Means sometime if isolated ports, means there might be chance that efficiency is not good. If there is a no connected port between there is a no existence of a connected port, and so there will be Yes, so while we chance have that like we get fractures, yes, yes. So while we have fractures which are not interlayer, which do not have interlayer connection, so in that case the water cannot. But in that cases, I don't think oil may store in that spaces also. Not exactly like what you told, but yeah, definitely. Anyhow, this heterogeneity can impact to that. Recovery factor. How? Let's see. So there are, regarding fissures versus fracture, what is difference between fissures and fractures? Fractures are means in naturally occurred and fissures Yes. where that we create. Uh, I think fissures are naturally occurred, na? Or fractures? fissures are naturally occurred Yes. and fractures are Fissures are created. naturally occurred and fractures are created by us. So let's consider fissured reservoir first.
we have a reservoir where naturally fractured were created, and let's suppose they all are highly conductive. It means that uh, the whatever the fractures were initially reservoir had are connected with each other, and it can flow the fluid through that entire connection. Okay, there are chances na ki whether created fractures are highly interconnected with other fractures present in that same reservoir. So let's consider the case where these all fractures are connected together, and during there are chances like if it is a small in size, then there are not that much issue. But let's suppose this fracture created the blocks, and these blocks are highly conductive. Okay, it means that there are chances to occur gravity segregations in these blocks. And if gravity segregations occurs, then what we wanted here that we won't get in that cases. Let's suppose whatever we are injecting from this injection well, and this water is separated, is getting separated by gravity impact. So how does it looks? Something like this. So these two phases can separate separately worse, and there are less chances. So this water can push this oil. Give me 2 minutes, guys. Yeah. So यहाँ पे बेसिक आइडिया ये है कि हमें ऑयल और वाटर को सेपरेट नहीं होने देना है, उसको पिस्टन लाइक इफेक्ट से ऑयल को पुश करना है. बट let's suppose the reservoir is a tilted reservoir, something like this, and we have a one well here and we have a one well here. This is, let's suppose, production well, and this is injection well. This reservoir is up deep, correct? And in fractures, let's suppose horizontal interface is there, oil and water. And if we are injecting water from here, so this water will try to push this oil. And we know water always wants to come down to the oil, but we are injecting water here continuously. That is the reason it tried to push the oil in upward direction. Guys, just think and tell me from these two cases. Let's suppose I have a, sorry, this kind of reservoir. Okay, can you see the screen now? Yes, sir. I'm talking about water. This is my injection. Sorry, this time injection is towards upside and production well is here. And do not consider it as a update right now. We will see that later, but just consider this kind of case. There is one injection well, there is one production well. In this case, injection one is the below to the production well, but in this case, injection is above to the production well, and this is our oil. Obviously, oil is above the water. Okay, and we are injecting water from here. Okay, and definitely in this case, we want to push the oil towards this downside, and water always try to maintain, uh, water always try to maintain lower to this oil.
So in which cases this water can push this oil effectively? Below 1, sir. Anyone else? And why? Because sir, water is highly dense and its gravity is downward, so it will easily push the oil towards the production well. Does it push oil towards the down well, or does water will more effectively settle down uh, at below to oil by gravity impact, or we are also adding the additional force to water, and based on that two values water may try to settle down in a greater speed than the oil? What do you think in that case? Sir, I मतलब कि think यहाँ से जो what वाटर आ रहा है तो हमें पता है कि वाटर ऑलवेज ट्राई करता है ऑयल के बिलो सेटल होने का, ओके। और अगर वाटर जो यहाँ पे आ रहा है वो ऑयल के बिलो ट्राई कर रहा है सेटल होने का, सो रेदर देन पुशिंग दिस ऑयल वो क्या करेगा, यहाँ से आएगा settle down, यहाँ पे चला जाएगा, settle down, यहाँ पे sir. आएगा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, थोड़े इतने ऑयल को पुश करेगा और खुद भी सेटल हो जाएगा और यहाँ से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो इन दिस केसेस दिस एरिया may not be covered, chances, okay, may not covered, but in this case वाटर क्या कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर रहा है, बिलो आने की ट्राई कर रहा है, ओके। और यहाँ से हम वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो तो हर जगह स्प्रेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्प्रेड होगा, यहाँ से भी नीचे आने की ट्राई करेगा। तो ये वाला जो पूरा इंटरफेस है तो ये क्या करेगा, ये पूरे एरिया को कवर करके ऑयल को क्या करेगा, धक्का लगाएगा, ओके। Okay, sir. अंडरस्टूड। तो किस केसेस में ज्यादा अच्छा मिलेगा, फर्स्ट वन, Above करेक्ट। 1. तो यस अबो वन। सो इन अबो वन व्हाट्स हैपनिंग, जो वाटर है वो क्या इंप्रूव कर रहा है, इसकी कौन सी इफिशिएंसी इंप्रूव होगी इस केसेस में, कौन सी वाली होगी, माइक्रो की मैक्रो? हेलो, Yes, sir. कौन सी वाली इफिशिएंसी इंप्रूव होगी? Microscopic, मैक्रो, sir. माइक्रोस्कोपिक की मैक्रोस्कोपिक? थिंक ना, हम क्या इंप्रूव कर रहे हैं, माइक्रो क्या था और मैक्रो क्या था, व्हाट वाज द Micro माइक्रो? final produce divided by contacted, मतलब जितना contacted हो रहा है उसमें से कितना प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, और मैक्रो क्या था? कॉन्टेक्टेड जो हो रहा है उस मतलब ओवरऑल में से कितना कॉन्टेक्टेड हो है. ओके, सो यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे ये वाला एरिया नहीं कवर हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा एरिया कांटेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्टेक्टेड एरिया हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस बट वी कैन डेफिनेटली से विद दीज टू केसेस मैक्रो इज इंप्रूव, ओके। ओके सर. Guys, do revision at least once, one session will complete, okay, so at least you have a good idea. So this is the case with 2, okay. So please note down these things, this already asked in gate examinations, but उसमें भी और लॉजिक से भी वो सोल्व हो सकता था, इसलिए बट दिस यू शुड नो ऑलवेज, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प for many flooding when we discuss regarding to this kind of tilted reservoir, okay. And so any doubt in this? नो सर. Okay, so यहाँ पे
ओके, ये दो केसेस है. So we were discussing regarding Fisher reservoir. So in Fisher reservoir क्या होगा, one or more fracture divided into blocks and they can become highly conductive, and in this case water oil may separated, and if the reservoir is tilted reservoir, then this interface becomes horizontal kind of things, and in that cases this case will give the more recovery. Okay. Now we can discuss regarding reservoir with random heterogeneity. Okay, this is specific to highly conductive blocks kind of fractures were present in the reservoir, and then we have this kind of scene. In next cases जिसमें रिजर्वायर क्या है, रैंडम हिट्रोजीनियस है. इसमें भी दो केसेस हो गए, लेयर्ड. Okay, that we will discuss separately, layered reservoir. Okay, let's discuss random heterogeneity. Random heterogeneity means like अपना जो रिजर्वायर है उसमें ऐसे 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 परमिएबल पाथ बन रहे हैं, ठीक है, बीच में कहीं पे परमिएबल नहीं भी है. ओके, दैट सिंपल मीन्स रैंडम heterogeneous. And in this case what we have to maintain is we have to maintain slow rate of water injection. Okay. And why should we maintain slow rate? Because slow rate increase the emission process efficiency. Okay. Or you can visualize this something like this. यहाँ पे volume of water है, यहाँ पे recovery है. तो ये वाली चीज ऑब्जर्व की गई है कि जब स्लोली इंजेक्ट करते हैं तब ज्यादा रिकवरी होता है. ये स्लोली है और ये रैपिड है. ओके, और कंसिडर दिस रॉक एज अ वाटर वेट. ओके, हम जो भी बात कर रहे हैं वो सारी बातें वाटर वेट रॉक के रिलेटेड ही कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ऑफ द टाइम्स आइडियल केस इन रिजर्वायर. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई रिजर्वायर है जहाँ पे रैंडम हिट्रोजेनिटी प्रेजेंट है, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, वाटर इंजेक्ट करवा रहे हैं तो उसका स्लो रेट हमें मेंटेन करना है. एंड if we maintain the slow rate then we will get the high recovery because of जब हम स्लो रेट से वाटर को इंजेक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस जो ऑयल है वो इजीली मूव हो रहा है क्योंकि वहां पे इम्बिशन की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. लेट्स सपोज अगर हमारा रिजर्वायर लेयर्ड है. ओके, लेयर्ड रिजर्वायर में भी हिट्रोजिनिटी प्रेजेंट हो सकती है. तो इन दैट केस अगर रिजर्वायर अगेन लेयर्ड रिजर्वायर विदाउट इंटर लेयर कनेक्टेड है, लाइक उसमें कोई लेयर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. ओके, यू नो लेयर दैट थिंग, समथिंग लाइक दिस. यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला जोन इम्परमिएबल है. ओके, यहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट बिटवीन दिस टू लेयर कोई कंडक्टिविटी नहीं है. और द नेक्स्ट केस इज ये वाला, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ से फ्लूइड कुछ ना कुछ करके इसमें आ रहा है. ओके,
ये नॉट कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, और ये वाला कनेक्टेड है। ओके, सो इन केसेस में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा विदाउट इंटरलेयर कनेक्टेड है तो जो भी हमने डिस्कस किया वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कि लेयर जब कनेक्टेड नहीं है तब गैस जो डिजोल्व है वो इंक्रीज इफिशिएंसी करेगा एंड वाटर वॉल्यूम्स हमें लेस देन फ्री गैस अवेलेबल उसमें इनिशियल इंजेक्ट करवा के हम उस गैस को रिडिजोल्व करवाएंगे, और गैस को रिडिजोल्व करवाने के बाद हम इंटरलेयर कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है नो हिट्रोजिनिटी को। ओके, और लेस हिट्रोजिनिटी को। मे बी के वेरी कर सकता है यहाँ पे, बट ये इंडिविजुअल जोन को हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ सेपरेट प्रोडक्शन इट इज प्रोड्यूसिंग। सो नो नीड टू थिंक अबाउट दैट मच, बट लेट सपोज जब कनेक्टेड है, ओके यहाँ से अगर वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज 2 वेल होते अगर, और यहाँ से कर रहे तो वाटर में गो लाइक दिस, तो वी मेक श्योर दैट लाइक इट्स गोइंग समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इन दिस केस, इन सेकंड केस हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादा चांसेस है कि हमारा जो फ्रंट है, ओके, वो दो डिस्टिंक्ट फ्रंट्स क्रिएट होने की बजाय हमारा ट्रांजिशन जोन क्रिएट हो। और जो ट्रांजिशन जोन्स मींस जहाँ पे कोई फ्रंट को हम डिस्टिंग ना कर पाए, जैसे कि हम यहाँ पे फ्रंट को क्लियरली डिस्टिंग कर पा रहे थे कि ये वाला अपना जो फ्रंट है यहाँ पे हम इसको डिस्टिंग कर पा रहे थे। ठीक है, तो इन दैट केस हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें जो वाटर का रेट है वो हाई वाटर रेट पे सेट करना है। ओके, सो जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग कि व्हेन इंटरलेयर कनेक्टेड है तब हमें वाटर रेट को क्या करना है, इन दिस केस वी हैव टू सेट वाटर रेट एट हाई वैल्यू। ओके, हाई वैल्यू मीन्स ग्रेटर वैल्यू देन प्रीवियस वन। ओके, और वाटर रेट एट हाई वैल्यू हमने सेट कर दिया, बट इसमें हमें इतना भी हाई नहीं रखना है कि इम्बिशन की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाए। ओके, इम्बिबेशन की इफिशियंसी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ओके, सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इम्बिबेशन की इफिशियंसी स्लो वाटर रेट पे हाई थी, दैट मीन्स हमें यहाँ पे वाटर रेट हाई रखना है, बट उतना भी हाई नहीं कर देना है कि जितना कि वो इम्बिबेशन की इफिशियंसी को बहुत ही कम कर दे। So this is all about impact of heterogeneity. So this flooding method is compatible with a heterogeneous reservoir also. So there is no any such a criteria like we cannot use water flooding with heterogeneous reservoir. Okay. So any doubt in this? No, sir. Hello. Okay. Anyone else wants to ask anything? No, sir. Okay. So this is the screening parameters for this water flooding. So let's have a quick discussion. So hope उतना इसमें कोई उतने क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेक श्योर कि जो भी क्रूड ऑयल है अपना वो उतना भी लाइट नहीं होना चाहिए और उतना भी हैवी नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारा मोबिलिटी रेशियो बहुत की वैल्यू competitively बहुत either लो हो जाए या बहुत हाई हो जाए, that we already discussed. Okay, what we discussed like m less than 1, m greater than 1 and m near to 1. Okay, मैं ऐसे लिखता हूँ m less than 1 but near to 1. So हमें ये वाली कंडीशन को इसमें मेंटेन करना है, तो that you should remember. सेकंड चीज ग्रेविटी एंड लाइक ये मेंटेन तभी होगा जब ग्रेविटी उसकी उसी रेंज में होगी, लाइक वी कैन अप्लाई टू वॉलेटाइल ऑयल. Okay, or we can say black oil, but we consider this parameter because इसमें भी बहुत वेरिएशन होते हैं डेंसिटी विस्कोसिटी के.
formation type is not crucial here. So we will just remember the exceptional cases such as polymer flooding and alkaline flooding. In that cases, we remember net thickness is not a critical here because let's suppose we want to create a front here. There is no like अगर छोटा भी thickness है तो उसमें से भी water, but like when we comparing to particular gas and water, then in that case we can say अगर छोटा thickness है तो gas flooding has advantages over water flooding, but that is again not critical. Average permeability, depth, temperature, and transmissibility are not critical parameters here, and these parameters you can see are from these project sources based on the successful of North American sources. So you can consider this parameter, and in book also you will find similar kind of the screening criteria for this water flooding. Okay, so this is all about the water flooding, whatever we covered. Any doubt in water flooding or anything related to theoretical parts you want to know? Like I have covered most of the things. The one things which I did not cover, let's discuss that first, then we will come to this session. So what is the prerequisition for this? What are the pre-requirement? Okay, so the first thing is um, if we want to perform the water flooding, so we have to make sure this we have to make sure two things. First thing is reservoir like we can write like this. Higher initial water is not suitable. Can anyone tell me why? Second thing is free gas is suitable and why? Okay. Can anyone tell me why higher initial water is not suitable for water flooding? मीन सर हम हमको प्रेशर जो है वो बबल पॉइंट के प्रेशर तक ही ले जाना है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो हमें विस्कोसिटी में वेरिएशन की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो सकती है। Yeah, that may be one factor. Uh, Another factor, like we can maintain the reservoir. अगर let's suppose कि pressure initially ही उतना high था तो then why should we require flooding? That's the thing now. Like water drive may active. You are considering water drive is still active. That case. Anything else? नो Okay. The simple reason is initially if high water is present, then there are chances it break through early. Okay, so early breakthrough is the reason. Okay, so it may early breakthrough if higher initial water is present, because we know water can move easily because it's a little bit what can I say, like when we are injecting the water and if initial water is high and if water is starts to produce, then it can decrease the production of oil, like similar kind of conning things you can consider here. Okay, like concept which we use in conning, na same kind of concept you can use for this condition. And why free gas is suitable? Can anyone tell? Like whenever our reservoir is a saturated reservoir, and if in that cases, if free gas is not produced from that reservoir, and if it is present in
at a reservoir condition, then in that case the free gas is suitable. According to that context I wrote, and now you can think why free gas is suitable. It's very simple. No need to think too much. Actually, it Sir, can I redissolve. think, Yes. Are you going to tell me the same one which I told? It sir, can I redissolve think, oil. Okay. okay, sir. Yes. Yeah. It can redissolve. Okay, sir. Okay. It can redissolve to, like we entered. I told now first step is a fill up step. So in that what we are doing, just redissolving the whatever free gas available at reservoir condition. So like consider this statement in terms of context, like rather than do not having a free gas which like at a saturated reservoir is not a better condition than the whenever the free gas is available at saturated reservoir, because we can redissolve it inside the oil, and we can improve the, like we can lower the viscosity of oil, and that is the helpful to maintain the mobility ratio near to 1. So it can redissolve. Okay, so these two are important things. So it's already 5:30. So we will start gas injection in next session. Anything else you want to know regarding this, or anything doubts you have, then you can keep the note for that also, and we will discuss that all in next session. Okay. Sir, can I So stop the recording? yeah, now we can stop. We conclude these sessions.